আপনারা চিনতে পারবেন কারা কারা করেছে। के दौरान जो विक्टिम परिवार जो लोग मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा में इस रिफ्यूज कैंप पे आके रुके हैं उनके साथ मुलाकात किए हैं। एकदम साफ तस्वीर से देख पा रहे हैं कि गवर्नर सीवी आनंद बोस बच्चों के साथ इधर बैठे हुए हैं। एकदम सामने जो महिला परिवार छोड़कर घर छोड़कर इधर चले आए हैं, डर की वजह से चले आए हैं। कोई किसी का घर तोड़ दिया गया है, किसी का घर में आग लगाया गया है। उन लोग के साथ राज्यपाल मुलाकात कर रहे हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुलाकात कर रहे हैं। चॉकलेट कैडबेरी बिस्कुट বাচ্চা সামনে পিছা করো না। ওটা কি আরে মেজ এই সেখানে ঢুকে দেখো না ওরে ওখানে বস এই ছোট ছোট প্লাগন feeling that there is a kind of jingoistic attempt for the people to establish somebody's supremacy. One section of the community trying to intimidate another section, almost telling them you shut up or put up. That is not the way democracy should function. That is not the way democracy will function. We will certainly take action. Now I could hear straight from the mothers who are the sufferers, the children who also, they talk to me. I talk to the children also. What is happening there is bizarre to say the least. No civilized society can tolerate this. It is going to be a commitment to the people of Bengal. All steps will be taken to see that the road of violence is stemmed here. Violence and corruption. These are the two things which are raised here. Nobody can live under fear. See, in a democracy like this, it's not theocratic supremacy which should be there. Nobody will be allowed to take the law in their hand. The feelings which are expressed by the women in particular will be taken note of seriously. All that a government can do, all that a government should do will be done. I will take it up with the appropriate authorities, with the state government and also the government of India. Menace of violence. Malda and Murshidabad total law and order failure.